बताइए कि आपकी जितनी भी फिल्में आती हैं उसमें आपकी ये कोशिश रहती है कि आप एक अलग तरीके से, अलग नजरिए से लोगों के सामने जाएं। अम, वैसे तो जो आप कह रहे हैं वो राइट भी है और इन वन वे इट्स रॉन्ग ऑल्सो, क्योंकि जब मैं अपनी नेक्स्ट फिल्म साइन करता हूँ तो आई डोंट थिंक ऑफ ट्राइंग टू डू समथिंग डिफरेंट. आई एम हेल्पलेसली लुकिंग फॉर समथिंग दैट विल एक्साइट मी. तो जब ऐसी कोई स्क्रिप्ट मुझे मिलती है दैट एक्साइट्स मी, आई डू इट. एंड ऐसा होता है कि इट्स हैपन्स टू बी डिफरेंट, क्योंकि मे बी डूइंग वन काइंड ऑफ वर्ल्ड ऑफ अ कैरेक्टर करने के बाद यू फील like doing something else. कर लिया तो ये ऐसा वाला कुछ कर लिया. हाँ, तो I think it's a search that is inside the heart. तो मैं ढूंढता रहता हूँ. और आपका जब करियर लॉन्च हुआ तो उस वक्त में आप फुल्ली प्रिपेयर्ड थे अपने आपको फिल्म इंडस्ट्री में डालने के लिए, या उस समय आप डरे सहमे थे? पता नहीं, I still feel the same. हर फिल्म के पहले I feel the same. I feel absolutely empty. I feel zero. But maybe that's a good thing, because then I need to fill it up so much with information about the character and the world. Okay, it helps me become another person. पहली फिल्म के पहले I was, in fact, maybe I was more confident. अच्छा. Because I could not see anything else in life. I just knew that I had to do this and I had to do it right. There was no fear at all. I remember my first, when I used to be on the set, I could not think of anything else but my dialogue, my shot. Nothing in life existed. Mm-hmm. So, but I think that passion is continuing because I think somewhere I'm becoming better, क्योंकि मैं अब more relaxed हूँ. I'm a bit more comfortable. I don't have to put so much effort. कहीं एक थोड़ा सा आपको faith प्रूव है. करने की जरूरत नहीं है. प्रूव करने की जरूरत तो बहुत है. हर फ्राइडे, whenever your film releases, you have to prove ये yourself. सुन के कुछ अटपटा लगता है यार ऋतिक की. अगर ऋतिक रोशन ये बोले कि मुझे प्रूव करने की जरूरत है. चीज़ ये है कि it's difficult. I mean, your film can fail or be a success, but you failing in your own eyes is very bad. बहुत डर है इसका. हाँ, तो कहीं लगता है कि I can, or even for small things like one shot, you feel that I can do this well. If I can just concentrate, if I can forget, if I can just be the character, just forget they're watching me, forget the world, and you know that you can do it. But will it come out? Will it happen? Will it not happen? That kind of insecurity, which is a good insecurity, is always there. I remember my first, I think, 4-5 years, I did a lot of reference acting. Reference acting मतलब कि किसी दूसरे एक्टर को बचपन में देखा होगा कि डायलॉग इस किस्म का, his style, the way he held the gun. So you want to be that kind of a hero. आप उनको कॉपी करने की कोशिश पूरी. Not copy, but somewhere जहन में that चीज वो बैठ जाती है that you want to be like that. You want to see yourself like this. So I did a lot of that first. It wasn't like a work of a true actor. लेकिन I think around कोई मिल गया कि वक्त आए. Exactly, एक वक्त वो आया कि आपकी पहली पिक्चर इतनी बड़ी हिट हुई, उसके बाद की सारी पिक्चरें हिट नहीं हुई, और उसके बाद आपको लोग कहने लगे कि वन फिल्म वंडर बॉय. फिर आपके पापा आए और उन्होंने कोई मिल गया जैसी एक फिल्म बनाई जिसने फिर सबको हिलाया. तो उस वक्त में जब लोग आपको ये कहते होंगे कि अरे ऋतिक वन फिल्म वंडर बॉय था, कैसा लगता था उसको? I don't feel bad because what they are saying is the truth. उस वक्त तक, if only one film is a hit and 4 are flops, it's true, no? He's a one film wonder. So why feel bad? People can only say 2 things, either truth or lies. If they are saying the truth, it's the truth. Why react? If it's lies, it's lies. So why react? I used to see magazine covers with my photo saying finished, khatam. I used to see that and I used to laugh. Kyunki, I mean, people will always need to talk. People need to pass their time, and actors and people in this film industry give them that material. So they're interested and they talk about it. It's okay. जब कोई मिल गया इतनी बड़ी हिट हो गई, उस वक्त की आपकी क्या फीलिंग थी? उस वक्त I realized कि
वो सारी जो फिल्में थी, they were all trying to replicate or duplicate my previous success, which was my first film. तो हर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की कोशिश ये थी कि ऋतिक रोशन ने जो किया है अपनी पहली फिल्म में, वो इतनी बड़ी हिट हुई है, तो लेट्स ट्राई एंड डू द सेम थिंग again and again and again. So all the films tried to do the same thing. Make him dance, make him do action. So it was not an honest film. Then Papa came and said, I have a role like this. It's a mentally challenged. You're not a star. You're playing a child. What do you want to do? You want to do it? And I just jumped at it because my heart was just, for the first time after Kaho Na Pyar Hai, my heart felt something. Your destiny is very, very obvious. The moment you feel something, you know it is going to be right. I look back कि मैंने जब ये कहानी मैंने सुनी थी तो मेरा रिएक्शन क्या था? How excited was I? I was not very excited. There is a insecurity of a star, you know. In the beginning, समझ में नहीं आता. You have to evolve as a human being, as an actor, to understand what this life is, what creativity is, what it means to be an actor, what the art is. तो उस वक्त I was thinking, yes, I'm a star and I have to be a star in the next films, be the solo lead and do action and hold the girl like this and all that. But that is not acting. That's not making honest films. कहते हैं ऋतिक की कोई मिल गया कि जो स्टोरी थी उसके जो स्ट्रगल था वो कहीं ना कहीं आपके खुद के स्ट्रगल से को रिलेट करता था, ऐसा था क्या? हाँ. इसलिए आपने उसमें इतना पैशन और इतना, जैसे कि आप खुद के अपने किरदार को निभा रहे थे. जब भी आप किसी भी एक्टर को एक खूबसूरत रोल में देखते हैं, कहीं ना कहीं इन हिज लाइफ ही हैज लिव्ड दैट लिटिल पार्ट ऑफ हिज लाइफ, सो ही नोज, ही हैज गॉट नॉलेज ऑफ दैट इमोशन एंड दैट ही चैनलाइजेस in his own way to fit into the world of the film, and he puts it into that. One thing that I've learned in all these years is that no experience is bad. Everything is there to teach you something, to make you rise above. And once you form your instincts through your experiences about how to see the world, how to see people, एक बार वो चीज़ आपके जहन में आ जाती है, उससे what you create is going to be more beautiful because you've lived your life in a more evolved way. So your interpretation of your dialogues, how you look into the camera, everything changes and comes from there. So if you want to create something better in life, you want to be a better singer, you want to be a better painter, you want to be a better whatever. If it is about creativity, it is only going to be what you are inside, what you have lived. So live well, you know, that's my only advice. आपकी खुद की फेवरेट कौन सी फिल्म है? आपने इतनी सारी फिल्में की हैं और बड़े अच्छे किरदार किए और नए तरीके के किरदार किए हैं, you know. मेरे ख्याल से कोई मिल गया was the closest to the person I was at that time, and Dhoom was very, very honest. क्योंकि in Dhoom we were not saying that this is a serious film, intense, real. Cinema. We are saying it's Dhoom. Come, have your popcorn, have your drink, enjoy. लेकिन जब इस तरीके का कैरेक्टर आप करते हैं जिसमें इतनी ऑनेस्टी, तो आपको क्या करना पड़ता है? आप कहते हैं कि आप बहुत प्रिपेयर करते हैं अपने उस कैरेक्टर में घुसने के लिए, आप अपने आप को काट लेते हैं और उस कैरेक्टर में घुसने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं. इस फिल्म के लिए आई हैड टू अनलर्न अ लॉट. जो मैंने सीखा था, यू नो, इट वाज ऑल a lot to do with craft. So craft and art is, you know, it's a merge. जो हर फिल्म में you use craft, you use art, you know, और उसी का तालमेल होता है हर शॉट में, हर एस्पेक्ट में इन फिल्म मेकिंग. तो I was doing a lot of craft. In this film, I have used no craft. It was just दिल से just from the heart. अच्छा, आपको जैसे कह सकते हैं कि एक कंप्लीट जो हिंदी फिल्म का हीरो होता है जिसमें लुक्स भी है और यू नो गोल्डन लॉक्स भी हैं और साथ में एक्टिंग भी है, प्रोफेशनलिज्म भी है और उसके साथ साथ यू आर अ ग्रेट डांसर, तो आप अपने आप को कंप्लीट हीरो मानते हो? एक कंप्लीट हीरो, ये सिर्फ जो परसेप्शन है बॉलीवुड, ये जो टर्म है ना, इट्स वेरी बॉलीवुड एज इन आवर इंडस्ट्री, राइट, कि कंप्लीट हीरो क्या होता है? An actor who can dance, who can fight, who can be a brother, a father, a lover, is good looking also. It's rubbish. A complete actor is an actor who completely gives himself to the role. वो role can be negative, it can be of an ugly person, it can be of a fat person, it can be of anything. That is a complete actor who gives himself completely to the role.
Yeah, up tak in our industry, we've only made films that spell drama. Every hero is a superhero. Reality was missing, which is why our films have not yet reached the world platform. World platform, right. Hero says I love you, girl says I love you. Kadak, they are dancing the same step. Kab rehearse kiya unhone, when they, how they're doing the same, same steps. That kind of content does not work on a world platform because it's not real. लेकिन लगता नहीं कि जो अपनी जो फिल्म इंडस्ट्री का कल्चर है ऋतिक, उसमें ये सारे एक बेसिक इंग्रेडिएंट है स्टार के लिए. तो आज की डेट में आप अपने आप को कहाँ पे रख रहे हो? स्टार आपके लिए या एक्टर फर्स्ट है या स्टार फर्स्ट है? मैं अपने आप को I don't see myself as a star at all. When I'm paid to do something, I have to be on stage. They want to see a star, I can give them a star. I can, do the thing. But I believe I'm an actor, and I don't get confused between my persona on the screen and my personal, the person I am. जब आपने जोधा अकबर की ऋतिक, तो उस वक्त आपको कैसा लग रहा था कि क्या आप एक्चुअली अकबर बन गए थे? इतने 100 साल पीछे जाना, इट्स नॉट इजी. नहीं, I read a lot of books. और काफी प्रिपेयर किया है. मेरा जो प्रोसेस है it's very organic, I just keep looking and searching, and something happens in 1 second. I get an expression, I get a thought, and I just go with it. कहते हैं आप बहुत like a perfectionist, from research to everything you do it. आप उस कैरेक्टर के स्केचेस को देखते हैं, उसको उसके अंदर फिट करने की अपने आप को कोशिश करते हैं, उसके मैनरिज्म्स को सीखते हैं. ऐसी है क्या ऐसा सब कुछ? हाँ भी और ना भी. मैं अपने आप को एक रूम में I lock myself and I sit there with the script. Sometimes I'll sit with the script and not do anything. I'll watch some TV. While I'm watching the TV, maybe my mind is working about the character and all that, and I get something. And I open the pages and I just start to read. Karte karte I get the walk, I get the way he will talk. I don't know what I do. I mean, and I don't think it's some fantastic secret or anything. It's not. It's nothing. We all do the same thing. We all practice. All actors, I think, practice and do their homework. कहते हैं आप बचपन से ही फिल्मों में ही जाना चाहते थे. ऑफ कोर्स फैमिली लेगेसी पेडिग्री सब कुछ ऐसा मुझे ही पता ही नहीं था कि आई हैड अ चॉइस. शायद आपकी जब तबीयत खराब रहती थी थोड़ी बहुत, और डॉक्टर्स ने कह दिया था कि तुम डांस तो कभी नहीं कर सकते हो, और एक्टिंग भी शायद पता नहीं, ऐसा था क्या कुछ? मैं 21 साल का था एंड आई हैड अ स्लिप डिस्क, एंड डॉक्टर्स ने रिपोर्ट्स देख के मुझे कहा था कि यू हैव स्कोलियोसिस एंड द डिस्क स्पेसेस आर वेरी वेरी ऑल ओवर द स्पाइन. देयर आर दीज. They said my back was basically 50 years old at the age of 21. So I said, okay, but I want to be an actor. I want to dance and jump and do all that. They said, no, you should not do that because it will not be good for you. And if you become an actor and do all these things, then we will eventually have to operate on you, and then anything can happen. That experience was there to teach me that life is more than what meets the eye. You have one life. What are you going to do? And the answer is simple. I just got up and I said, it doesn't matter. This is where my heart is going to take me. I'm going there. तो आपको ज़्यादा work करना पड़ा. You had to put in lot more than probably someone. It didn't seem like work. I enjoyed it. Doctors had said no. So I traveled all over the world. I bought books. I met wherever I got a chance. I spoke about my back to people, and I got information. यहाँ से वहाँ से. Alternative medicine and therapies, and everywhere I got information, and then I built my body and I made it stronger. Till now I do my exercises for the morning and evening. I do it for 5 minutes apart from the gym. This is just something that I do. So I believe that the word miracle must have come from somewhere. You think something is impossible and then it becomes possible, and you say, wow, miracle. तो आप कहते बहुत भगवान को सुबह शाम आप सिर नवाते होंगे उनके सामने, क्योंकि आपने जो कुछ चाहा, जो कुछ सोचा करने के लिए, वो आप कर पा रहे हैं.
I don't wake up in the morning and pray to God. I sometimes don't. Very rarely I actually pray. कहते हैं कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स का बहुत बड़ा आपके ऊपर साया रहा है, जिसे कह सकते हैं, और आप बहुत क्लोज हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स से. Yeah, my grandfather, Mr. Jivum Prakash. जी. Yeah, of course. He has been my guide, my idol. All the beautiful things that I have learnt in my life, I learned from him. All the sensitive things, all the creativity, all the poetry in my life, I learned from him. And I remember his words till this day. He used to always say, the world is out to provoke you. If you get provoked, it's your downfall. तो ऐसी बहुत सी बातें हैं that he has taught me. And both my grandparents, Dada I call him, Nana I call my nani. उल्टा है थोड़ा. But I used to always look at them as king and queen. Oh. Because I used to go to their house and it was a big bungalow, and I have some beautiful times with them. और इतने बड़े माशाल्लाह, इतने बड़े डायरेक्टर रहे अपने टाइम के. Such a successful. He's had some 21 jubilees in his career graph, which is fantastic. आपके पापा का भी बहुत बड़ा हाथ आप पे रहा है, तो आपको हमेशा कहा जाता है फादर्स सन, ऐसा है क्या कुछ? हाँ हूँ, of course हूँ. I'm my father's son. Yeah, whatever I've learned watching him. कभी भी हर मोड़ पे उनका सपोर्ट और उनका वो रहता है आपके पास. Yes, I feel very blessed and very special and very lucky. और अभी after all the success that I've got, I still look at him and I feel, damn यार, how does he do it? आपकी तो एक म्यूजिकल बैकग्राउंड भी आपकी फैमिली का है, और सुना मैंने कि काइट्स में आपने गाना भी गाया. हाँ, तो आपने म्यूजिक in the sky, soaring together. म्यूजिक क्रिएट करने में आपका कोई हाथ होता है? I've been sitting on music sittings since I was 8 years old. सारी all my father's films. Kites में एक song है, दिल क्यों ये मेरा शोर करे, जो एक ट्यून थी जो एक कैसेट में rejected songs के टेप में, it was lying in my chacha's room. I had picked it up when I was 9 years old, 8 or 9 years old. तो वो धुन मुझे आज तक मुझे याद थी, because I used to sing it in school and all. I used to love that song. So I reminded my chacha that there's this one song which I remember. दिल क्यों ये मेरा शोर करे, उधर नहीं तेरी ओर चले. So this song is one of the rejected songs when I was 9 years old. आप हॉलीवुड की तरफ देख रहे हैं या नहीं? हाँ भी और ना भी. I'm looking for a good film, whether it is Hollywood or Bollywood or Chinese, it doesn't matter. A good honest script. Good honest script. Thank you so much talking Thank to you. us. Thank you. तो ये थे आमने सामने में ऋतिक रोशन. अगले हफ्ते किसी नई पर्सनालिटी के साथ मैं आपसे फिर मिलती हूँ. तब तक के लिए नमस्कार.